Hey guys, welcome to online preparation, and today I am here with the third part of the grammar, and this is sentences. Sentences are very important in grammar. Basically sentences क्या होते हैं in हिंदी हम उन्हें वाक्य कहते हैं. अब sentences किससे बनते हैं? पहले कोई एक अल्फ़ाबेट होता है लाइक C, फिर दूसरा अल्फ़ाबेट A और फिर तीसरा अल्फ़ाबेट T. सो ये तीन अल्फ़ाबेट मिलकर एक वर्ड क्रिएट करते हैं, दैट इज़ कैट. और जब बहुत सारे वर्ड होते हैं, मोर देन 2 और 3 वर्ड, दे फॉर्म अ सेंटेंस. सो सेंटेंस तो ये हो गया. फॉर एग्जाम्पल इसमें एक सेंटेंस दे रखा है, इट इज़ गोइंग टू रेन टुडे. ये सिंपल सेंटेंस है. माई नेम इज़ प्रियांशी. दिस इज सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस. टुडे इट इज़ रेनिंग. दिस इज सिंपल सेंटेंस. सो दीज ऑल आर सेंटेंस. Now sentences are divided into broadly categories. They have category. They are divided into 4 kinds. First is declarative sentence. Second is imperative sentence. Third is interrogative sentence. Fourth is exclamatory sentence. So the first kind is declarative sentences. Declarative sentences state facts. Basically the declarative sentences होते हैं, they declare something or tell you something. They are general. For example, it is going to rain today. आज बारिश होगी. इट मीन्स वो सीधे एक डिक्लेरेशन दे रहा है, एक फैक्ट बता रहा है कि आज बारिश हो सकती है. आज बारिश हो सकती है. यू शुड गो टू द लाइब्रेरी समटाइम. आपको लाइब्रेरी जाना चाहिए कभी. सो वो सीधे आपको बोल रहा है, फैक्ट बताया था. इन सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज इन इज वेरी जनरल इन विच समथिंग इज डिक्लेयरिंग और देयर आर सम फैक्ट्स. बट देयर इज वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड विद अ full stop. It's always end with a full stop. Here also. So declarative sentence always end with a full stop. Now declarative sentences also have 2 kinds. Declarative sentences are of 2 kinds. First is affirmative, second is negative. Affirmative and negative. Affirmative को हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं, इसमें नहीं देखा, that is positive. There are 2 things in your life also, positive and negative. We must be positive in our life because negative is something not good. So here also in this sentence, positive is always, have you seen Madhuri sings well. There is something, she sings well, affirmative. But Madhuri does not sing well, that is negative point. वो नहीं गा पाती अच्छा. So where negative sentence have no or not, that is negative. To identify this sentence, अगर नेगेटिव और एफर्मेटिव को आपको पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है, सो नेगेटिव में हमेशा नो और नॉट आता है. फॉर एग्जाम्पल माधुरी डज नॉट सिंग, सो नॉट आया यहाँ. एफर्मेटिव में ऐसा कुछ नहीं होता, दैट इज सिंपल थिंग एंड दैट इज डिक्लेयरिंग समथिंग. सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एफर्मेटिव एंड नेगेटिव, एंड एफर्मेटिव इज ऑल्सो नोन एज पॉजिटिव. So this is the declarative sentence. Now the second sentence is interrogative sentences. Basically interrogative is a word that is used for asking question. So interrogative always are the sentence where we ask questions or questions are put up by us or to us. For example, did you brush your teeth? क्या आपने अपने teeth brush किए? So here I am asking question to you. Did you brush your teeth? Where did you keep the cake? आपने केक कहाँ रखा? So whenever I am asking the question or someone else is asking the question, they are called interrogative sentences. And there is a rule, interrogative sentences always end with a question mark. ऐसा नहीं है कि full stop से end होगा, exclamatory mark से end होगा या फिर कुछ होगा ही नहीं. Interrogative means questions, but it's going to be end with a question mark. Now interrogative sentences are of 4 kinds. Now interrogative sentences are also divided into broad categories. So number 1 is yes no questions, then we have WH questions, then we have tag questions, and then we have choice questions. Now what are yes no questions? So yes no questions are answered, that question that can be answered with a yes or no response. As you know, in the sentence yes no questions are saying means either yes or no. It means अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसका आंसर येस और नो में दिया जा सकता है या फिर दिया जा रहा है, लाइक डिड यू डू योर होमवर्क. तो दिस इज एन येस नो क्वेश्चन बिकॉज उसमें पूछा जा रहा है डिड यू डू योर होमवर्क. सो मैं कह सकती हूँ येस आई डिड माई होमवर्क और नो आई डिड नॉट डू माई होमवर्क. आर यू रेडी टू गो टू द स्कूल? इन दिस सेंटेंस ऑल्सो आई कैन से येस I am ready to go to school or say no, I am not. So in the questions, in the sentence, if there are questions that can be answered with a yes or no are yes no questions. But if I say who is your class teacher, so then it will be not a yes no questions because I cannot say yes she is my class teacher. The sentence is directly asking to me who is your class teacher. So this is not a
yes no questions. So yes no questions are the question that can be answered with a yes or no in a simple language. Now then we have WH questions. Now what are WH questions? So as you know from the WH, these are the questions that are begin with words WH, such as who, why, when, where, which, how. So the sentence which begins with who, why, when, where, which, how, in which WH comes first. For example, which is your favorite color? Now here WH. So the sentence which begin with WH. This is so easy. Yes no questions means yes no, WH questions mean WH. Then we have tag questions. Tag questions are questions that are formed by adding an interrogative tag at the end of a declarative or an imperative statement. So tag questions are questions that are formed by adding an interrogative tag at the end of a declarative or imperative sentence. It means tag question में क्या होता है? They are simple sentence. Like example, Mr. Lal is your class teacher. But we at the last or anywhere we add an interrogative tag that is isn't she. पहले क्वेश्चन था मिसेस लाल आपकी क्लास टीचर है, लेकिन उसके बाद अगर उसमें पूछ लिया क्या वो है मिस आपकी क्लास टीचर है, isn't she, क्या वो है, तो वो टैग क्वेश्चन. सो जस्ट टेक अ नेक्स्ट एग्जांपल, यू आर अ गुड स्टूडेंट, aren't you मीन्स पहले तो उसने एक सिंपल सेंटेंस डिक्लेयर किया यू आर अ गुड स्टूडेंट, लेकिन फिर एक इंटेरोगेटिव टैग आया, यानी उसने पूछा aren't you, आप हो ना. माया डजंट स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली, वो अच्छे से फ्रेंच नहीं बोल पाती. डज शी, क्या वो बोल लेती है. तो बेसिकली टैग क्वेश्चंस हैव एन इंटेरोगेटिव tag at the end of a sentence. And there is also one thing you must have to note it, that is affirmative sentences. Affirmative sentences have negative tag. Now what are affirmative sentences? We have discussed just time before. Mrs. Lal is your class teacher. So this is affirmative sentences. There is not something positive, affirmative, but at the last isn't she, yani isn't means it is a negative tag. Is this time Maya doesn't speak French fluently. Here starting with a negative sentences doesn't, but end with a affirmative tag. Does she? So अगर कोई सेंटेंस affirmative शुरू होता है तो उसमें टैग नेगेटिव आएगा, लेकिन अगर सेंटेंस ही नेगेटिव शुरू होता है तो there will be tag affirmative. So this is tag question. Then we have choice question, the fourth and the last part, choice questions. As from the name of the question you are understanding what is it. Choice questions are the question that provide a choice. The answer to the choice question isn't in the question itself. For example, would you prefer chocolate or vanilla ice cream? So in this question वो आपसे choice पूछ रहा है, would you prefer chocolate ice cream or vanilla ice cream? So you are giving a choice in that question. Do you like the black dress or the blue one? So here is asking your choice, क्या आपको black वाली dress पसंद है या फिर blue वाली. So the sentence in which the choice is asked, that is the choice question. So we discussed 4 types of sentences. First is yes no questions, then WH questions, then tag questions, now choice question. Now the last part, the last sentence, that is imperative sentence. Now what are imperative sentences? So imperative sentences express a command, a request or a piece of advice. What they do? When a sentence having a command, कोई सीधे order दे रहा है आपको, या फिर कोई request कर रहा है, या फिर आपको कोई advice दे रहा है. For example, stop fighting. मैं ये order दे रही हूँ कि fight करना बंद करो. That is imperative sentences. Please keep your eyes open. मैं request कर रही हूँ, please help me, please keep that book on the table. So whenever I am requesting, that is imperative sentence. Or even when I am giving advice to someone, for example, always speak true, always do your work on time. So whenever I am giving advice also, that is also an imperative sentences. In most imperative sentence, the subjective is implied, isn't not meant. So we have discussed 3 sentences. So first we discussed declarative sentence, then we have 2 parts in it. Then we discussed interrogative sentence, we have 4 parts in it. Third we discussed imperative sentence, and the last is exclamatory sentences. Now what is meaning of exclamatory? Basically English grammar जो होती है उसमें जो आपके parts होते हैं,
हाफ ऑफ द मीनिंग आर इन द सेंटेंस ओनली. मैंने अभी एडजेक्टिव्स के भी वीडियो बनाए थे, उसमें भी तो बहुत सारे पार्ट थे, लाइक क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी. सो उसमें भी जो उसका मीनिंग होता है दैट इज इन द वर्ड इटसेल्फ ओनली. बस आपको इंग्लिश ग्रामर में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. बाकी अगर सेंटेंस आते हैं, अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं सो आप ये कर सकते हैं. इसलिए मेरे पास आज 4 or 5 वर्ड्स हैं जिन्हें आपको गेस करना है कि वो कौन से सेंटेंसेस हैं. उससे पहले हम ये देख लेते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं. देन फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज एक्सक्लेमेटरी. एक्सक्लेमेटरी मीन्स टू एक्सक्लेम समथिंग. फॉर एग्जाम्पल, एक्सप्रेस सडन इमोशंस एंड फीलिंग मीन्स आई एम एक्सप्रेसिंग माई इमोशंस एंड फीलिंग टू बी वेरी फ्री. जैसे कि एक होता है कि हाँ वाओ व्हाट अ प्लीजेंट वेदर, लेकिन जब देख के मैं इतना खुश रहा हूँ वाओ व्हाट अ प्लीजेंट वेदर इट इज. सो जब हम अपनी एक्साइटमेंट और इमोशंस फीलिंग्स को शेयर करते हैं सडनली, कोई घबराहट नहीं, दैट इज एक्सक्लेमेटरी टू एक्सप्लेन. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट प्लीजेंट वेदर इट इज, दिस इज फैब्युलस. एंड हाँ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क ऑलवेज. एक इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस की एक तरीके से पहचान है कि वो हमेशा क्वेश्चन मार्क से ख़त्म होता है, और एक एक्सक्लेमेटरी की एक्सप्लेनेशन मार्क से. अगर ये कभी पेपर में आता है सो दो चीज़ें तो आपको कंफर्म है कि अगर क्वेश्चन मार्क है तो वो इंटेरोगेटिव है, और एक्सक्लेमेटरी है अगर एक्सक्लेमेशन मार्क है तो वो एक्सक्लेमेटरी है. इम्पेरेटिव का लिए ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, एंड डिक्लेरेटिव का लिए सिंपल दैट डिक्लेयर समथिंग. सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सक्लेमेटरी. नाउ वी आर गोइंग टू डू सम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पार्ट. So these are some sentences that we are going to do it. The first question is how many students can form a society? कितने स्टूडेंट्स एक सोसाइटी को फॉर्म कर सकते हैं. अब ये सेंटेंस जैसे कि मैंने आपको कहा, आपने इसमें क्वेश्चन मार्क देखते ही देख लिया कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. बट अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कौन सा पार्ट, तो दिस इज WH क्वेश्चन, क्योंकि WH क्वेश्चन में H आता है एंड हाउ इज अ पार्ट ऑफ दिस. येस नो हो नहीं सकता, और भी आप जितने आप अप्लाई कर से देख सकते हैं. टैग भी नहीं है ये, और देयर इज वन मोर सेंटेंस, चॉइस भी नहीं है. सो ऑफ कोर्स दिस इज WH क्वेश्चंस एंड इंटेरोगेटिव. सेकंड इज द न्यूज़ केम एज अ कंप्लीट सरप्राइज. वो न्यूज़ एक बिल्कुल सरप्राइज की तरह आई. सो दिस इज सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस, कोई चीज़ डिक्लेयर हो रही है तो दिस इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस. अगर आप उसमें टाइप देखेंगे तो दिस इज एफर्मेटिव, दैट इज पॉजिटिव. देन व्हेन डिड दे come to a decision, वो decision कब लेंगे, उस decision पे कब आएंगे. Here also this is question and this is WH, same. How late the train is. Now you guess this. So this is also as easy because here we have exclamatory mark, and as when the exclamatory marks come, exclamatory marks means exclamatory sentences. Where are you coming from? Guess this. This is the same, question mark, interrogative, WH questions. What a nice fellow he is. So this is also exclamatory because we have exclamation mark. Can you play the piano? Can you play the piano? Now, see, this is interrogative as you see the question mark is here, but which kind is it? Guess it. Yes, this is yes no questions because can you play the piano, so you can answer it. Yes, I can play the piano. No, I cannot play the piano. So this is yes no questions. 8 1. They were not forced to come down. They were not forced to come down. Guess this. Yes, this is declarative. In declarative there is negative because it is having not. So there are some sign to identify the sentence, because if it is declarative, it's declaring a sentence, then we have not, so declarative negative sentence. So we have then the wool comes from sheep. The wool comes from sheep. Guess it. Declarative. Yes, this is declarative sentences because here the simple thing is declaring the wools come from the sheep. Did it rain last night? Guess it. Yes, this is interrogative sentences. Now guess which part? This is yes no questions because did it rain last night? Yes, it rained last night. No, it not rained last night. We have won the match. Again it's very easy. Exclamatory, exclamation mark. Take up the challenge. What is this? This is imperative sentences because I am ordering take up the challenge, you have to. Mara is leaving for Morocco tomorrow. Maria is leaving for Morocco tomorrow. So this is also declarative because the thing is declaring. I am saying कि Myra कल Morocco चली जाएगी. Then we have pay attention. Now which is this? Guess. Yes, this is imperative sentence which
यस दिस इज ऑर्डर, बिकॉज मैं ऑर्डर दे रही हूँ, पे अटेंशन. लास्ट, many roads are still blocked. Many roads are still blocked. So I think this is simple declarative, because डिक्लेयर कर रहे हैं कि अभी बहुत सारे लोग ब्लॉक हैं. तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया सेंटेंस, जिसमें हमने प्रैक्टिस भी की. और आई थिंक ये प्रैक्टिस करने से ये होता है कि हमारी जो हमने कॉन्सेप्ट समझा है उसमें से जो कन्फ्यूजन होती है वो क्लियर हो जाती है और हमें और अच्छे से समझ में आ जाता है. तो दिस इज द टुडे वीडियो सेंटेंस. अगर आपको और भी इंग्लिश के वीडियो देखने हैं तो मैंने नाउन और एडजेक्टिव को डिफाइन कर रखा है, आप उन्हें भी देख सकते हैं. और नेक्स्ट वीडियो विल बी वेरी सून. सो गाइज, इफ यू लाइक दिस और इफ यू अंडरस्टैंड, प्लीज लाइक द वीडियो, comment also and share also. So I hope we will meet in the next video. Thank you.